And 1 year later, the evidence is right here in this room. Who will blink first? So far from preventing the expansion of NATO, Russian actions have actually resulted in the expansion of NATO. It's a mess for Russia and it's a mess for the Western world, for NATO and the United States. Putin is a dictator, and if he loses, that means the end of his regime, and probably of him personally. So he has to keep going. Year 2. No end in sight. Streaming now. Literally every major power in the world is gearing up with its own digital currency. Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to News 9 Live. I'm Kabir Naqvi and you're watching this special broadcast of top stories from our studios here in the National Capital Region. And our focus this news hour is going to be on Mizoram and domestic political developments. Let's not forget, ladies and gentlemen, today the winter session of the Parliament is also set to begin and a stormy session is expected. It's likely some crucial bills in Jammu and Kashmir are going to be taken up. A women's reservation bill is also going to be tabled in the Lok Sabha, and that's not all. The Ethics Committee report, which proposes the expulsion of Trinamool Congress Member of Parliament Mahua Moitra's expulsion, is also going to be tabled in the Lok Sabha. All of that is going to happen. The India opposition bloc leaders, they're going to constantly meet before the parliamentary session in Mallikarjun Kharge's chamber. But let's shift our focus first and foremost, because it was Super Sunday yesterday and the Bharatiya Janata Party is going to be buoyed after that 3-1 victory in the states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, where Telangana went to the Congress party. Mizoram, the counting for that particular state is going to take place today. It was Super Sunday yesterday, it's Mizoram Monday today, and the counting of votes is in fact underway. Mizoram's results come a day after BJP's resounding victory in the Hindi heartland states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. Now, the main parties in the Mizoram Assembly election are the ruling Mizo National Front, led by Chief Minister Zoramthanga, the Zoram People's Movement and the Congress Party. Now, the BJP, which is a minor player in this particular northeastern state, and which won just the one seat, is hoping to make further inroads. But is that going to be possible? Well, we'll have to wait and find out as the counting of votes is underway. Now, the Election Commission deferred the counting by a day as Sunday held a special significance for the Christian majority population in the state, a day of veneration for many in the state of Mizoram. In the 2018 Assembly polls, the MNF, a constituent of the BJP-led NDA, and 2018 numbers were, albeit just a little bit different than what the state might throw up this time around. In 2018 Assembly polls, the MNF, which is a constituent of the BJP-led NDA, won 26 seats in the 40-seat assembly, dislodging the Congress from the power in the state. Now, the ZPM, which is the Zoram People's Movement, it emerged victorious in 8 of these 40 seats, whilst beg your pardon, the Congress Party was relegated to a third with just 5 seats compared to the 34 seats that it had won back in 2013. Will this time be any different? Well, let's take that up with the expert panelist that's joining us this very morning, Professor F. Lal Ram Looney, political analyst and assistant professor, Faith College, Aizawl, Mizoram, joins us on the broadcast. A very good morning to you, Professor. It was Super Sunday yesterday, Professor. But it's Mizoram Monday, and I'm glad because amongst all of the cacophony that we saw yesterday vis-a-vis Congress's downplay in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh and in Rajasthan, what actually would have happened in Mizoram might have been sidelined. So I'm happy that it was Super Sunday yesterday, but it's Mizoram Monday today. Now, several people, according to the exit polls that came out, many saying that it's the MNF that's going to get more seats. Many saying that it's going to be the ZPM that's going to get more seats. Many people also expecting a hung assembly. Professor, early in the morning, even as the counting begins, what side are you inclined towards at the moment?
Yes, good morning. Yeah, this is a super Monday for Mizoram, as yesterday was, the counting was this thing delayed, postponed by the ACI. Yes, this election is very significant this time because, the bipolar fight usually between the two parties is not bipolar anymore this time, and it has become a fight from the three angles. The third front, known as the PM, a very new, regional political party has come up, and they have gained quite a popularity among the voters this time. And this in this election, the fight will, the main fight is now will be between the ruling, the incumbent MNF, and the ZPM. If we have looked at the exit poll, the CNX has predicted, the Indian TV has predicted hung government, and the similarity of vote share between the MNF and the ZPM. But Janki Bhatt, has put a very high this thing of the ZPM party. But like we know that this exit poll are a bit inaccurate. We cannot say it's 100% correct because of we don't know exactly how many this thing exactly how many samples have been taken, and the ground reality is a little bit different, again. But I must say that it will be very close tie between the MNF and the Congress this time, and in which side ever it swings, if the wind have swing that, then either the Congress or the PM can. You know what, Professor? I categorically remember, Professor. I remember that you had joined our exit poll show, and on that very evening, you were of the opinion that the Congress party might fare even lesser than what the exit polls were actually suggesting. You're telling us right now that the MNF and the Congress party might have a neck-and-neck competition. We're looking at 5 seats, and you were of the opinion that Congress might get even lesser than that. So are we looking at MNF also bagging as little as just 5 to 6 seats? No, MNF will not go beyond, this thing will not go below 10, I should say. But the Congress this time, can get below 5 seats because, in the if you look from the past elections, like the municipality elections or the village council elections at the rural areas, it was always the Congress that trailed behind the MNF and the ZPM. And in this election also, seeing the campaign wave and seeing the the swing of seeing the moods of the people, and how people have been predicted. And if you see the political mood here, that the spirit of the Congress, or the influence of, I should say, the influence of the Congress is quite low this time, so it can go below 5 as well. You know what, Professor? I think that the BJP and the Congress will fight neck to neck in this election. Right. Professor, also touch upon the anti-incumbency factor. Not a lot of articles out there that speak about Zoramthanga, and I'm going to request my director to put Zoramthanga, the Chief Minister's pictures on the screen. So, Professor, in terms of anti-incumbency, how deep was it? Was it actually a key issue this time around in Mizoram elections? Well, it seems like we've lost our connection with Professor Lal Ramluni. We're going to quickly try and patch her back. Meanwhile, the man that you see on your screens. All right, I'm being told Professor is back with us. Professor, did you hear the question, or do you want me to repeat it? Hello? Yes, Professor, we can hear you loud and clear. Can you hear us? Yes, okay. Can you repeat the question again? I can for sure. Touch upon the anti-incumbency factor. We have Zoramthanga's pictures as he cast his vote when Mizoram went to polls on our screens. Talk about the anti-incumbency factor. Not many articles out there. Are people happy with what he did over the last couple of years? Because you see, Zoramthanga has taken some populist, stands, be it the cancellation of the biometrics, be it welcoming all the refugees that came across, from Manipur, be it what's happening across the border in Myanmar. Anti-incumbency factor. Did people really like Zoramthanga's tenure or not? Hello? Yes.
the anti-incumbency factor is quite strong this time, and the usually the voting trend, the voting trend is that whoever is in the ruling party, lasts for 2 terms. Usually, whether it was, if you look at the past election, whether it was a Congress or the MNF, that they usually last for like two terms, 10 terms. But this time, that anti-incumbency factor is quite strong, even though the MNF has this. Have this trump card, such as this zo-ethnic, brotherhood, or MNF supports and their support towards Mizo nationalism, which includes those the same zo-ethnic groups that coming from the Myanmar or the Manipur ethnic conflict, that the same stands against the central government wishes. But this is not, a sole reason in which the MNF could win the election. The anti-incumbency wave, like I said, it's very much strong in the rural areas as well as in the urban areas. One of the factor in the urban area, even among the government workers, the government servants, is the irregular payment of their monthly salary, which is a very big factor that causes deep satisfaction towards the present government by many by many government workers. This is one of the factor that could turn against the MNF this time. Pertinent points that you've raised over there, Professor. Also tell us a little bit about Lal Duhoma's ZPM as well. Ever since 2018, they have been on the rise. They bagged about 8 seats in the 40-seat assembly last time around. And from what we have been picking up from the ground is that they've been on the rise ever since 2018. A little bit about ZPM and Lal Duhoma. But before you do that, Professor, we have a reaction from the former IAS man himself and the leader of ZPM. Let's quickly listen into what Lal Duhoma said, and then we'll come back to you for that answer. MNF is led by a false prophet. If he says so, that the result will be the negative. That's why we are confident. No, it's early to count a chick before it hatches. The reports, everybody knows about these reports. The opinion polls taken, so many YouTubers in Mizoram, they have done so many opinions here and there, even in the remote corner of the state, and as well as by the national medias, and all these results of the exit polls pointed towards us. That will not be necessary. Right from the beginning, we said that we are going to have a comfortable majority. We are going to form a stable government. We don't need any other political party. Well, you heard the man over there, didn't you, Professor? We don't need any other political party. We're strong enough. And people have constantly been drawing these parallels as to what the Tripura Motha party meant for the state of Tripura and Tripura's political mapping, and how important the ZPM will become this time around. Traditionally, has it ever happened? What's your take on what might happen if there is a hung assembly? Who's going to go to who? The cricket analogies did not die down yesterday as well. I'm going to throw another one. Many say that the actual game begins after the last ball has been delivered. What's your take on this one? Yes, I should start saying that the Mizoram is the only state in the northeast where the BJP hasn't marked its footprints here. So and this time also the BJP has said this that they will that they are willing to be a part of the government, that they are campaigning to form a coalition government either with the ZPM or the Congress, and I'm sorry, with the ZPM or with the MNF, and these two parties have alleged each other that they are aligned with the BJP. Because among the masses, among the Mizo masses, that there's a feeling, unsafety feeling that Mizoram will not be safe. The secular feeling, or the secularism, the spirit of secularism is not safe under the BJP government. This is a general perception of the BJP, especially in regards to secularism. Yes, every political party has claimed that they are bigger and they are stronger than the others. But yes,
I agree that the rise of the ZPM since 2018 election is quite strong. And like I said, the whether it was a Congress or the MNF, they always have a strong vote banks in the rural areas because of their free economic distribution policy. Like the Congress was selling the free cash distribution under NLUP, new land use policy of 1 lakh rupee, and the MNF since 2018 promised 3 lakh rupees. 2 lakh rupees, I'm sorry, under the Socio-Economic Development Program, SEDP. But this the free cash distribution policy has failed miserably. I should say that, people are not even this time, people are not even getting, 1 lakh or so. So among the rural masses, that, the dissatisfaction towards the present government is quite strong. And the ZPM has promised a hand-holding policy, that is their economic policy, saying that they are not entertained, the party do not entertain that free cash distribution policy, but they are willing to help the farmers in the name of hand-holding, like they will hold the hands of the farmers by the government. So this policy has quite attract the rural voters as well. And the voting behavior of the urban areas, especially Aizawl, is very neutral. It always depends on where the swing voters have cast their vote. So in the urban areas, the swing voters have are quite important. And in the month of May, we have a municipal election in Lunglei, that is second capital of Mizoram. And in that 11 wards of the municipal election in Lunglei, that the ZPM has swung all the seats. So therefore, the increased importance of the ZPM and in the urban as well as Professor, it seems like you've made those points that tell us how the ZPM has established itself as a downright power in the state of Mizoram ever since 2018. Let's talk a little bit about the permutations and combinations that might come into play as well. So the ZPM and Zoramthanga's party together, or Zoramthanga, ZPM and the Congress party together, what kind of a combination do you think is the most probable in a scenario of a hung assembly? Now, I know you've made those points about how the BJP is not something that people favor in the state of Mizoram. Last time around, the numbers would tell you the same thing as well, just the 1 seat. But they haven't fought on all 40 seats this time, just the 23. Is it really a tri-corner contest, or are we really discounting the BJP this time around? Tell us a little bit about that and the permutation and combinations that might just work this time around. Okay, 3 days before the polling day, that the ZPM leaders in the ZPM leaders press conference, that the ZPM has specifically mentioned in the press conference that if there's a possibility ever of the hung government and coalition government has to be formed, that the ZPM will not join hands with the BJP. That's what the ZPM working president Puke Sabdang has said in the press conference, that they will see the possibility of joining hands with the Congress. But the MNF hasn't said anything so far. And like I said, these two parties have, alleged each other of joining their hands with the, behind the scene, joining their hands with the BJP behind the scene. They accuse of each other that, they are, the MNF accused of the ZPM as joining hands with the BJP. At the same time, the BJP is accused of the MNF joining hands with the BJP, like that. But the MNF hasn't mentioned anything about it. But the ZPM has specifically said that even if there's a possibility of forming a coalition government, that they will not work with the BJP. Rather, they will side with the Congress in forming the coalition government. So you're saying the ZPM has actually given an upper hand of sorts to the Congress party in the state of Mizoram. Is that what you're saying? Yes, that's what I'm saying. All right. Well, that would certainly make all the Congress leaders really happy. I don't know how, what kind of reaction this is going to, push out from the BJP leaders in the state. But will Zoramthanga really be happy about the Congress party coming into the fray? I mean, Mizoram quite literally threw out the Congress party in 2013 onwards. In 2018, they completely washed out the Congress party from the state of Mizoram. Is Zoramthanga going to be happy with Congress now coming into this combination? Well, if he's not a part of the government formation, that he doesn't have a choice.
but it will be blessing for the Congress, because right now the Congress secured the third, how it looks like the Congress is securing the Right, third right. position. They're in the third position in this election. So this, I mean, even if there is a possibility of forming a coalition government, and if the Congress are a part of the coalition government, of course this will be a blessing for the Congress. But I don't think the MNF and the Congress will work together. All right. If there's a necessity of a coalition government. All They right, will not. Professor, it's still early doors. It's still early doors, and not many leads or Yes. trends that have trickled in. But let's hope for the best. Let's hope good sense prevails and good governance prevails by the end of it. Very quickly, before we let you go, and to all the viewers that are joining us, Professor is going to be with us throughout the day, bringing us updates on what's happening in Mizoram, and also giving us her expert analysis on the numbers that finally do trickle in. Professor Lalram Rooney, in terms of the chief ministerial faces, it's Zoramthanga versus the ZPM's president? Yes, in terms of chief ministerial candidate, it will be it's a call between the MNF Mizoram Thanga and the ZPM Laldu Om. All right, so just these two faces that are going to face off today, ladies and gentlemen. We will get to know who's going to be the ruling party, who's going to have the fair share of the turkey in a short course of time, even as counting is underway. Visuals and pictures on your screen. Zoramthanga versus Lalduhom in Mizoram. Will it be the MNF or will it be the ZPM? And what role will the Congress now play? And what kind of a role will the Bharatiya Janata Party have to play? Will they be able to successfully make further inroads than their one seat last time around? Well, we'll have to wait and find out. Professor Lal Ramlooni, many thanks for joining with us and helping us out with your insightful inputs this very morning. Let's hope for a Mizoram Monday where good governance prevails. Thank you so much. Yeah. All right then. Well, we've covered Mizoram. Let's also talk about the other four states that went to polls, and the counting and the results for these four states are out. In the four state assembly elections that were considered as the semi-final to the 2024 general election, the Bharatiya Janata Party has bagged wins in 3 of those states. The Prime Minister has called it a hat-trick of the Bharatiya Janata Party. Now, the Congress was able to wrest Telangana in South from the BJP. Many saying this being very significant for the Congress party as well, taking it away from the Bharatiya Rashtra Samiti, a party that has been in power since the formation of the state. Now, after the Bharatiya Janata Party won comfortably in Madhya Pradesh, in Rajasthan and in Chhattisgarh, the main northern states, the Hindi heartland states, Prime Minister Narendra Modi said the results point to the party doing well in the upcoming 2024 Lok Sabha polls as well. The BJP was able to wrest Rajasthan from the Congress, with eastern Rajasthan, which is the Gujar-dominated, swinging in favor of the Bharatiya Janata Party. Now, the Congress was in Madhya Pradesh, which was expected to see a close contest, but it was a clean sweep for the Bharatiya Janata Party over there as well. Kamal Nath, which was Congress's heavyweight, said he never anticipated the loss. Chhattisgarh, the state witnessed a surprise, with Congress losing the tribal belt completely and the BJP bagging the elections altogether. The only consolation for the Congress was in Telangana, where it beat the BRS in a high-stakes game. इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार,
इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है ये चुनाव हर किसान जीता है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। पर फिर से प्रचंड जीत मिली है सर, 5वीं बार। क्या प्रतिक्रिया सर? पहले आप। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता के हृदय के हार हैं, मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी बसे हैं। उनकी गारंटी पर भरोसा, डबल इंजन की सरकार के काम। एक और महत्वपूर्ण चीज सर, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की एक कड़ी थी लाडली बहना योजना। लाडली बहनों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आपने 160 से ज्यादा सभाएं की सर, एक दिन में 10-10, 12-12 सभाएं करते थे आप। वो तो मेरा कर्तव्य था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा रोल आपका रहा, 80 से ज्यादा सभाएं आपने पूरे मध्य प्रदेश में की। आपको अनुमान था कि इतनी सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की आएगी? सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश की जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5वीं बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। अगर इस जीत के पीछे श्रेय की हम बात करें तो पहला नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि
मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी। और जो समय उन्होंने दिया, जो नीतियां उन्होंने दी, जो योजनाएं उन्होंने दी, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, जिसके आधार पर ये नतीजा संभव हो पाया। और राज्य के स्तर पर पहले तो मैं अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो जी जान की मेहनत उन्होंने की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ये संभव हो पाया, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, जिन्होंने नेतृत्व के आधार पर हम सबको मार्गदर्शन दिया। और ये एक संयुक्त एफर्ट रहा सभी का, और मैं मानता हूँ कि एक नया इतिहास और नया युग मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का 18 साल के बाद ये निरंतर सफर चलता रहेगा, विकास और प्रगति का, मध्य प्रदेश को विकास के चौखट पर पहुंचाने के लिए। कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया खास तौर पर आपके खिलाफ, वो व्यक्तिगत हमले ज़्यादा किए, वो चाहे सेंट्रल हो या फिर मध्य प्रदेश में क्यों ना हो। मैंने पिछले 3 साल से मैं आरोप, गाली, श्राप, हर तरीके की नीचे दिखाने की सोच मैं अपने मेरे परिवार पे भी मैं अपनी छाती पे लिया है। 2020 में जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया, 3 साल मैंने कुछ नहीं कहा। 2023 में कांग्रेस के उन सभी नेताओं को आज ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने जवाब दे दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। और जो लोग मेरे कद की बात कर रहे थे और जो लोग मेरे परिवार का इतिहास और परंपरा की बात कर रहे थे, उनको अपना कद ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने दिखा दिया और उनको अपना कद मध्य प्रदेश की जनता ने उनको दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ में हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत का भी आंकड़ा पार कर रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि नतीजों में भी परिवर्तित होंगे। आपने भी उम्मीद की थी कुछ इसी तरह की, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि बघेल सरकार रिपीट हो सकती, बीजेपी के लिए बहुत टफ फाइट होगा, लेकिन अब स्थिति पूरी बदली हुई है, ठीक उसी तरह जैसे 2018 में बदली थी। स्पष्ट था, और मैं तो पिछले लंबे समय से बोल रहा हूं कि ये सरकार जाने वाली है अपने भ्रष्टाचार पे। आतंक और भय जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में छाया हुआ था, भ्रष्टाचार के मुद्दे और जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित भूपेश बघेल ने की, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको रिजेक्ट किया। चाहे पीएससी का घोटाला हो, शराब घोटाला हो, या फिर महादेव ऐप के मामले में घोटाले हो, या छत्तीसगढ़ को जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे वो अधूरे रह गए, उन अधूरे घोषणा पत्र को लेकर जनता के मन में आक्रोश था। ऐसी कौन सी प्रमुख बातें रही जो बीजेपी के हक में गई? क्या जिस तरह से एक प्रेडिक्शन ये भी है कि सेकेंड फेज पर बीजेपी ने पूरी तरह से लीड किया, ये प्रेडिक्शन सही है या फिर दोनों फेज में बीजेपी ने लीड किया? जो रुझान आ रहे हैं उससे आपको जानकारी तो मिल रही होगी। रुझान बीजेपी के पक्ष में और वोटों का परसेंटेज 4% बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और कांग्रेस नीचे जा रही है। और यहाँ तक हमने 3 रोज पहले ही कहा था कि 55 सीट बीजेपी की आएगी और 35 में कांग्रेस से उठेगी। मोदी की गारंटी काम आई या फिर राहुल की गारंटी पर विश्वास नहीं किया? राहुल जहाँ जहाँ जाते हैं यही हाल होता है कांग्रेस का। मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने 100% भरोसा किया। सीएम पद के चेहरे के तौर पर आपका भी नाम है, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अनुभव है। इसके अलावा आपके प्रदेश के कुछ और नेताओं के नाम चल रहे हैं, आप अपने आप को दावेदार मानते हैं? नहीं, कोई दावेदार हमारे यहाँ नहीं है। हम तो विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में वहाँ दल का नेता चुना जाएगा, तो ये एक प्रक्रिया सामान्यता होती है और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगा। जिनको भी नेता बनाते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कौन सी ऐसी चीज थी जो बीजेपी के हक में, अगर हम 3 प्रमुख बातें करें तो? भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय मोदी जी की गारंटी और डबल इंजन की सरकार और जो घोषणा पत्र हमने जारी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया और पूर्व में किए गए वादों को पूरा नहीं किया,
उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी और जिस तरह से एक उम्मीद जताई जा रही थी, बीजेपी के पक्ष में माहौल जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जमीन पर भी कुछ उसी तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल अपने आप को सीएम पद के दावेदार पर रमन सिंह साहब अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ में अरुण साहब है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष। अब अगली रणनीति क्या होगी? सरकार तो बहुमत के साथ बनने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी को की गारंटी को पूरा करने का बहुत सारे घोटालों की बात बीजेपी करती है, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? जेल जाएंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने वाला कितना भी बड़ा आदमी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस किस पर कार्रवाई की जाएगी? सीएम को हमेशा एक फेस मानकर बीजेपी आरोप करती रही है। जो भी होगा, कितना बड़ा आदमी हो, जनता के लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अरुण साफ तौर पर बता रहे थे कि जनता की गाढ़ी कमाई जिन लोगों ने लूटी है उन पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर की दिखाते हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आप देखिए नारे भी लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के बाद में उनके अंदर का जो जोश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ी जीत है और 162 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं जनता जनार्दन का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया है, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश की ये महाविजय हमारे मोदी जी के लोकप्रियता की विजय है, उनके प्रति लोगों का जो विश्वास है उसकी विजय है। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी नीतियां और उनका क्रियान्वयन हुआ उसको भी मिला हुआ ये समर्थन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन आम जनता ने इस चुनाव में दिया है वो अप्रत्याशित है, मन को प्रसन्न करने वाला है। जब ज़्यादा समर्थन मिलता है तो जवाबदारी भी ज़्यादा बढ़ती है और मुझे पूरा विश्वास है कि नई सरकार जब बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की सेवा उसकी अपेक्षा करेंगे। एक राज्य नहीं, तीन राज्य में क्लीन खिलाफ जो पीएम मोदी ने काउंटर किया। चलिए, तो आप केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वो श्रेय दे ही रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी श्रेय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से योजनाएं चलाई, जिस तरह से उन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राउंड पर हुआ, उसका ही लाभ बीजेपी को मिला है, जो आज इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई है। 55. You can't go to 70. Where are you going to get those votes from? I'm just thinking that they all have to be standing out there. 55. 34 last time. Last time, you know the circumstances. तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we'd have won Rajasthan. सरकार गई ना on that. हाँ. That has changed. So expectation is. Ma'am, during my Jhalawad visit, I was just trying to find out a single poster of Congress candidate. Not able. मैं तो आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है।
और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनकी। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इसमें अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में तो थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी थी तो नो ऑप्शन, इस प्रकार के हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर, अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ, मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वासियों की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूँगा। आप लोगों के बीच में रहूँगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश वासियों के बीच में रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। सर ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी, सबने हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर, और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर, और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने। हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि
जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी। सर जो सचिन पायलट के और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से, जो लोग हत्यारे हैं। उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले। और राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मैंडेट को। हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। I'd like to thank the lakhs of workers of the BRS party who have toiled very hard over the last 3 months for ensuring that we come back at the hustlings in a successful manner. Unfortunately, the result is definitely not what we wanted. Now, we are short by about 20 seats. But nevertheless, we have put up a valiant fight, and I am deeply grateful to the people of Telangana for blessing us with 2 consecutive terms. 2 बार उन्होंने हमें मौका दिया। 10 साल नया तेलंगाना राज्य जिसको बनाने में हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, अहम भूमिका प्ले किया। इसमें हमें मौका दिया गया 2 बार। कोशिश हमने तो ये की कि तेलंगाना को पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने की, और हम काफी हद तक कामयाब भी हो चुके। बट इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, हम हमारा काम जारी रखेंगे। हमारे जो लीडर हैं केसीआर सर, उनके लीडरशिप में वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना, एंड वी विल अश्योर all cooperation to the new government. We compliment and congratulate Congress party on winning the mandate of the people. We wish them the very best in fulfilling all the promises that they have made to the people. Of course,
we'll play the role of a constructive opposition, which is what has been conferred upon to us by the people of Telangana, and we will play a very constructive role. I promise you that, because this is a state for which we fought hard. This is a state for which our Honorable Chief Minister and our party president has in fact risked his life. So we will do everything in our capacity to help the newly incumbent government to ensure that a proper transition happens. And as part of the democratic process, our Chief Minister has already sent his resignation to the Honorable Governor, and I think the due process will follow hereafter. And I thank the entire media members as well for your cooperation, for your support during elections and even before that. Thank you. चिंतन करेंगे, बैठक करेंगे, जैसा आपने कहा, बाद में बताएंगे. अभी क्या बताएंगे आप? अभी तो हाँ, क्या बता रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या रहा हार का? दो चार दिन तो रुक जाइए, क्या जल्दी है? Part of the election, when you go to an election, there are only two outcomes: either you win, you lose. Today we lost, but not every day is the same. See, we will bounce back. We'll come back strong. We'll come back even stronger. So wait for that day. నేనేమంటున్నా, not every day is today is Sunday. I know. Not every day is Sunday. Remember that. Now you just heard that massive bite belt of all the peoples whose fate has now changed. Several of them, their fate might just change in terms of what office they're going to be getting. Meanwhile, several of the MPs who contested the assembly polls and won will have to quit one of the seats in the next 14 days, else they stand to lose their parliament membership. The Bharatiya Janata Party fielded 21 members of parliament, including Union Ministers Narendra Singh Tomar, Prahlad Singh Patel and Phagan Singh Kolaste in the assembly polls. 7 each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 4 in Chhattisgarh and 3 in Telangana. Whilst 12 BJP MPs won, 9 of them lost. Congress had also fielded MPs Revant Reddy and Uttam Kumar Reddy, both of whom have won in Telangana. Now, Union Ministers Narendra Singh Tomar, Prahlad Patel and Renuka Singh won elections along with BJP MPs Baba Balaknath, Diya Kumari, Kirodi Lal Meena and Rajyavardhan Singh Rathore. RLP's lone Lok Sabha member Hanuman Beniwal also won the polls in Rajasthan. Another Union Minister, Phagan Singh Kolaste, has lost the assembly polls. Meanwhile, Bharatiya Janata Party MPs Ganesh Singh and Baigrath Chaudhary were among those who lost. 9 of them that lost, 12 of them that won. Now, the CM phase, the chief ministerial phase, is likely to be discussed over the next few days for the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The legislative party meeting is going to be held in these states for deciding the names of the chief ministerial candidate and to elect the legislative party leaders. However, sources to TV9 Bharatvarsh have said that in Rajasthan, Vasundhara Raje has suggested to the central leadership the name of Union Minister Gajendra Singh Shekhawat as the chief minister of Rajasthan. In Telangana, sources say the Congress has already staked claim to form the government in the state. Sources also said that the state police has been told that the CM swearing in will take place today or on the 9th of December. But on the other hand, the recent electoral setback for the Congress party in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan may weaken its bargaining position within the INDIA, the India Opposition Bloc Alliance, ahead of the upcoming Lok Sabha elections. Congress, which is anticipating a strong performance in the 5 state elections, aimed to bolster its claim for leadership in the India Alliance for the 2024 Lok Sabha elections. However, these aspirations have been significantly challenged by the recent defeats in the states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. Now, Congress President Mallikarjun Kharge expressed determination to strengthen the party in these states and collaborate with INDIA alliance partners for the upcoming Lok Sabha elections.
Controversy in Madhya Pradesh arose due to the lack of alliance between Congress and the Samajwadi Party, with disputes over Kamal Nath's Akhilesh comment further straining relations within the opposition alliance INDIA. Now, after Congress's defeat in Madhya Pradesh, the Samajwadi Party attributed it to Kamal Nath's remarks about Akhilesh Yadav, the Akhilesh remark that had come out, highlighting a seat-sharing dispute within the INDIA alliance. Samajwadi Party spokesperson Manoj Singh Yadav also criticized Congress for lagging behind the BJP in the mentioned states, highlighting a demand for 5 seats and expressing discontent over insults to their leaders. Well, the elections are far from over, but the lingering after effect is going to stay on for a couple of more days, at least till all the chief ministers are sweared in. But today, the winter session of the parliament is set to begin as well. And buoyed by the recent victory in the assembly elections, an assertive BJP is gearing up to challenge the Congress-led opposition in the winter session of the parliament. The proceedings are likely to start on a stormy note, with the ethics committee scheduled to table the report recommending expulsion of TMC MP Mahua Moitra. Now, the report of Parliament's Ethics Committee on the cash for query charges against Trinamool Congress MP Mahua Moitra is going to be tabled in the Lok Sabha today. The report that has been adopted by the Ethics Committee earlier this month, it proposes expulsion of the Trinamool Congress Member of Parliament from the Lok Sabha. Apart from the Ethics Committee's report and Mahua Moitra's cash for query case, 5 very crucial bills specifically pertaining to Jammu and Kashmir, aimed at expanding and restructuring its reservation laws and representation in its prospective 90-member Legislative Assembly, are very likely to be taken up during the winter session of the Parliament. Out of these 5 bills, 4 are likely to be taken up for passage in the Lok Sabha, where they were introduced back in July during the monsoon session. However, one fresh bill providing for extension of women's reservation law has been listed for introduction as well, consideration and passage in the ensuing session. Meanwhile, the INDIA, the India Opposition Bloc's parliamentary leaders, are going to meet today at Leader of Opposition for the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge's chamber. So much that is expected to take place. We're waiting on chief ministerial faces. Various legislative parties are going to meet in these states. Apart from that, the winter session is going to commence today. 4 bills on Jammu and Kashmir, 1 on women's reservation, and of course, the Ethics Committee report that is going to be taken up. And let's not forget, Mizoram, the counting for Mizoram is underway. All the latest details. Voucher News 9 will bring you all the latest details. That's all the time we have for you. This is Kabir Nakvi signing off. Don't go anywhere.